તો રાહુલ ગાંધી સુરત કોર્ટમાં હાજર થયા। કોર્ટમાં સુનાવણી પણ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે। રાહુલ ગાંધીએ તેમનું નિવેદન નોંધાવ્યું છે। જી હા, એક દિવસના પ્રવાસે તેઓ અહીંયા આવ્યા છે। સુરતમાં તેઓ આવ્યા છે, કોર્ટમાં હાજરી આપવા માટે તેઓ આવ્યા હતા। કોર્ટની જે સુનાવણી હતી તે પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે। જાતિવાચક જે નિવેદન આપ્યું હતું તેને લઈને આ કેસ ચાલી રહ્યો છે અને તેમાં તે મુદ્દે જ હાજરી આપવા માટે તેઓ પહોંચ્યા સુરત। તો આપણે જણાવી દઈએ, કોર્ટમાં સુનાવણી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે। રાહુલ ગાંધીએ તેમનું નિવેદન પણ નોંધાવ્યું છે। તો વિવાદિત ટિપ્પણીને લઈને राहुल गांधी पर केस ये नहीं है और यूं भी हमारे नेता कभी ऐसे शब्द का उच्चारण करते ही नहीं है। अगली सुनवाई कब है? 12-7 तारीख को है, दोनों पक्षों की दलील सुनने में आएगी। क्या अगली बार राहुल गांधी को आना होगा? नहीं, अगली बार राहुल गांधी साहब को आने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब जजमेंट का स्टेज होगा तब नामदार कोर्ट बुलाएगी, तब आना पड़ेगा। तो क्या राहुल गांधी माफी मांगने के इरादे में नजर आ रहे हैं? नहीं, माफी जब गुनाह ही नहीं किया तो माफी कैसे मांगेंगे? ये गुनाह थोड़ी किया है। તો વકીલનું કહેવું છે કે ગુનો કર્યો નથી તો પછી માફી માંગવાનો કોઈ સવાલ જ નથી। આગળના સમયમાં હવે બંને પક્ષની દલીલ સાંભળવામાં આવશે, ત્યારબાદ કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવશે। સંવાદદાતા કીર્તેશ પાસેથી વધુ અપડેટ મેળવીએ છીએ। કીર્તેશ, વકીલ કહી રહ્યા છે કે માફી માંગવાનો તો કોઈ સવાલ જ નથી। બિલકુલ, જે રીતે રાહુલ ગાંધી સુરતની કોર્ટમાં હાજર થયા હતા અને 1 કલાક જેટલી અંદર રાહુલ ગાંધીનું સ્ટેટમેન્ટ નોટ કરવામાં આવ્યું હતું। તેમને તમામ પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી કે તે આગામી તારીખમાં હાજર ના રહેવી પડે તે પ્રકારની પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી અને તે માત્ર વિપક્ષના નેતા તરીકે એક સભામાં સંબોધન કર્યું હતું, કોઈ સમાજની ટિપ્પણી નથી કરી તેવી વાત સામે આવતા હવે આ મામલાની વધુ સુનાવણી 12/7 રાખવામાં આવી છે। પણ રાહુલ ગાંધી હવે પછીની તારીખમાં હાજર નહીં રહે તો ચાલશે, પણ તેમના બંને પક્ષના વકીલો દલીલોથી આગળ કેસ ચાલશે। જી કીર્તેશ, આપનો આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ। તો 12/7 આગામી સુનાવણી હાથ ધરાશે। કોરોના સામેની લડાઈમાં સતત નવી પહેલ થઈ રહી છે અને જેના અનુસંધાને હવે દેશમાં ડ્રોનના ઉપયોગની તૈયારી પણ શરૂ થઈ ચૂકી છે। કોશિશ એ છે કે ડ્રોન દ્વારા એવા વિસ્તારોમાં પણ જલ્દીમાં જલ્દી રસી અને જરૂરી દવાઓ પહોંચાડી શકાય જ્યાં બીજા માધ્યમ દ્વારા મોડું થવાની આશંકા હોય। तेलंगाना देश का पहला ऐसा राज्य है जिसे दवा और टीके पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने की अनुमति मिली है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना मेडिसिन फ्रॉम स्काई का उद्देश्य उन क्षेत्रों में टीकों की सप्लाई सुनिश्चित करने का है जहां सड़क मार्ग से पहुंचना मुश्किल है या वहां तक पहुंचने में वक्त ज्यादा लगने की आशंका है। इस प्रोजेक्ट को अमलीजामा पहनाने के लिए तेलंगाना ने ई-कॉमर्स कंपनी से बाकायदा करार भी कर लिया और जल्द ही इसके पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने वाला है। उम्मीद जताई जा रही है कि जून के अंत तक विकाराबाद जिले में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। The drone will take off from the district headquarter hospital. ड्रोन जिला अस्पताल के मुख्यालय से उड़ान भरेगा और जिले के दूसरे 18 सब सेंटर्स तक दवाओं की डिलीवरी करेगा। अभी ये ट्रायल के स्टेज पर है। हमने वैक्सीन और दवाइयों की डिलीवरी के इच्छुक ऑपरेटरों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा है और इसके लिए एक खाका भी तैयार किया है। And we'll obviously record all the findings and all the नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक मानव रहित एरियल वाहन 35 किलोमीटर तक की यात्रा कर पाएंगे और वो कम से कम 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। ड्रोन के माध्यम से अधिकतम 4 किलोग्राम तक के भार की ढुलाई होगी, जबकि ड्रोन का गंतव्य और उड़ान मार्ग पहले से जीपीएस द्वारा पूर्व परिभाषित होगा। ड्रोन वितरण केंद्रों तक दवाओं की खेप पहुंचाने के बाद वापस बेस स्टेशन पर लौट पाएंगे। one partner who understands how unmanned. इसमें कई चीजों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा, जैसे एक पार्टनर को ये पता होना चाहिए कि कैसे अनमैन्ड ड्रोन को ट्रैक करना है, उसे कंट्रोल करना है। उसी तरह दूसरी तरफ दवाओं की डिलीवरी लेने वाले और वैक्सीन के तापमान को डिलीवरी तक कंट्रोल रखने का ध्यान रखना होगा। यहीं पर ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक टीम वर्क की तरह होगा। Different strengths and different backgrounds. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी इस प्रोजेक्ट पर अंतिम दिशा निर्देश आना बाकी है, जो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में परीक्षण पूरा करने के बाद ही जारी किए जाएंगे।
फिलवक्त भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद परिवहन के दौरान टीकों के तापमान और दूसरी चुनौतियों पर रिसर्च कर रहा है, जिसके पूरा होने के बाद उम्मीद की जा सकती है कि देश में स्मार्ट और सामूहिक टीकाकरण जमीनी हकीकत बन पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. રજા આપશો. નમસ્કાર.